Assalamu alaikum, friends. This is Abdul Ghafoor. Welcome back to the Teaching and Learning. So today's lesson about the micro teaching. This lesson will be in Urdu and English so that it can facilitate more teachers. So we'll be learning what is micro teaching, why is it, how it works, what are some examples of the micro teaching, and how actually it functions in education. So let's talk about, that the first, what is micro teaching? Let me share the screen. Before explaining what is micro teaching, let me share, two images and differentiate between them. The first image you can see here on the screen. And the second image is this. Again, this one. And this one. So let's talk about the first one. So the first image, जो पहला image है, वो represent कर रहा है प्रोफेशनल्स को, टीचर्स को, और जो दूसरा इमेज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स को. So let's talk about the first image. As I said, the first image is representing the teachers. Yes. So micro teaching means to train the teachers. Micro teaching का जो मतलब है कि उस्ताद को ट्रेन करना, एक ऐसी टेक्निक जिनमें उस्ताद की जो वीक पॉइंट्स हों, जो गैप्स हों, न्यू स्किल्स, टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना. This is the simple definition of it. That means train the teachers. However, the second image that shows the students in the classroom. Now, this is the normal classroom that teacher teaches. ये वो एक नॉर्मल क्लासरूम में जो एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है. सो द फर्स्ट इमेज, जो पहला इमेज है, वो है माइक्रो टीचिंग, मीन्स टीचर्स की ट्रेनिंग करना, और जो सेकंड इमेज है वो है मैक्रो टीचिंग, मीन स्टूडेंट्स को पढ़ाना, टीचर्स. जो माइक्रो टीचिंग में ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स होते हैं. अगेन, माइक्रो टीचिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स होते हैं. हाउएवर, जो मैक्रो टीचिंग होते हैं वो स्टूडेंट्स एज ए लर्नर होते हैं. अब आ जाते हैं हम उसकी डिटेल में बात करनी. सो लेट्स टॉक अबाउट द मोर डिटेल एंड that what is exactly the. So I highlighted the few points here, that the micro teaching is a training setting for the student teacher, as I said, student teacher, where complexities of the normal classroom teaching are reduced by practicing the component skill at the time limiting of the continuous single concept. पहली बात कि जितनी भी क्लासरूम में प्रॉब्लम्स आती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूजन स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए, लेसन प्लान को कैसे इंप्रूव किया जाए, बच्चों को असेस कैसे किया जाए, बच्चों को कॉपी में काम कैसे करवाया जाए, बच्चों को टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट करवाई जाए, बच्चों को साइंस कैसे पढ़ाई जाए, कौन सी एक्टिविटी सूटेबल हैं, ये सारी टीचर्स को सिखाई जाती हैं जब वो कोई ट्रेनिंग कर रहे हो या कोई डिग्री प्रोग्राम ले रहे हो. उसके थ्रू उस स्टूडेंट टीचर को वो कराया जाता है. सेकंड थिंग, इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में या टीचर ट्रेनिंग टेक्निक में या माइक्रो टीचिंग में ऐसे होता है कि
कोई भी एट अ टाइम सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज का ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसमें टीचर्स को ये पढ़ाया जाएगा कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाए। दिस इज वन ऑफ द स्किल, राइट। अगर दूसरा कोई प्रोग्राम होगा ट्रेनिंग का तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे की जाए। अगर कोई तीसरा स्किल अगर वो बढ़ाया जाए कि बच्चों को लैब में कैसे जो है ना वो क्या नाम है एपरेटस का यूज कैसे किया जाए। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट से रिलेटेड स्किल्स या उनको किसी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए स्किल्स जो सिखाए जाते हैं वो टीचर्स ट्रेनिंग में प्रोग्राम। अब इसका पर्पस क्या है इसके पीछे में? जब एक टीचर when a teacher uses a variety of the methods in order, that means it will enhance, it will affect on the the students learning। ये टीचर्स को सिखाने का मतलब ये है कि लर्निंग को जो ना बेहतर बनाना है। तो ये टाइम पीरियड, ये स्किल्स जो ना टीचर्स में टाइमली पीरियडिकली डेवलप किए जाते हैं। और अब इसके कुछ तरीकेकार होते हैं ना। कुछ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो स्कूल कंडक्ट कर रहा होता है, कुछ मिनिस्ट्रीज कंडक्ट कर रही होती है, ये तो इनसाइड ड्यूरिंग द सर्विसेज होते हैं, बट हम इस पे मजीद हम बात कर रहे थे। तो इसमें जो स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स की जो क्या टाइमिंग होती है उस स्किल्स को पढ़ाने के लिए, दैट विल बी हार्डली 5 to 20 minutes। I wrote here 10 minutes, okay, but maximum 5 to 20 minutes, okay। उसमें ये किया जाता है। Sometimes they say the 30 minutes, okay, जिसका एक स्टैंडर्ड टाइम आप इसको ये कह लें, जिसमें जो टीचर स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। एक कम ग्रुप को आपने देखा होगा कि अगर आपने ट्रेनिंग अगर अटेंड की भी हो किसी स्कूल में तो उसमें ये किया जाता है मोस्टली कि एक ही डिपार्टमेंट के या दो डिपार्टमेंट के टीचर्स मिला के उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है, इंग्लिश का, साइंस का, ऐसे ही मैथ्स का, इनका ना। इसमें अगर कोरिलेशन होती है तो फिर सबको मिक्स करा जाता है। अगर उसमें दूसरा आपने देखा होगा कि आप लोगों को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी टेबल पे, तो उन ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब यही होता है कि you should learn from your peers, okay, and discuss about the more, okay। So the students is a 5 to 10 size of the groups, they are arranged in a particular table or particular place, okay, that they can easily discuss and they can easily learn from their peers, okay। So this is about the general concept of the what is the micro teaching, okay। Let's talk about the historical perspective about that। अब ये कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन 1963, डीडब्ल्यू एलन ने दिया था, द माइक्रो टीचिंग इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, द डेवलपिंग द टीचिंग बिहेवियर। उसने बोला कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द टीचिंग, हाउ वी कैन इम्प्रूव द लर्निंग, एंड दैट कैन बी द पॉसिबल व्हेन you update the pupil teachers or when you timely develop or conduct the professional development to enhance the new skills or around the new skills। कोई नए skills के बारे में पढ़ाया जाए, कोई innovations ली जाए, कोई changes उसमें teachers training में दी जाए, और वो teachers training की होती है ताकि वो बच्चों को या classroom में वो implement कर सके। This was the concept of the micro teaching, okay। अब ये तो चीजें हो गई कि व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, ओके। अब आ जाते हैं कि ये कैसे, मतलब अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा करें कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो स्किल डाउन होती है। अब स्किल डाउन का मतलब ये क्या होता है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए होते हैं। मतलब जो नंबर ऑफ दिस जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं वो बड़े कम होते हैं एक नॉर्मल क्लास से। जो ना नॉर्मल क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 25, 30 और समटाइम्स 40 भी होते हैं। तो इसलिए इसको वी कॉल देम द स्किल डाउन टीचिंग बिकॉज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी, टीचर स्टूडेंट्स और पीपल स्टूडेंट्स बड़े। अब इसको हम लर्निंग टू टीच इसको भी हम बोलते हैं। और यू कैन असेस बाय योरसेल्फ, रिव्यू योर ओन परफॉर्मेंस, फीडबैक फ्रॉम द एक्सपीरियंस पीयर्स, ओके। अब ये किसको करवाया जाता है?
for those to whom we have tuned. अब इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं. एक तो वो जो स्टूडेंट्स टीचर बनना चाहते हैं, वी कॉल देम द प्री सर्विसेज. अब प्री सर्विसेज में अगर हम देखें कि B.Ed के प्रोग्राम्स हैं जो आप योर TLS प्रोग्राम, B.Ed program, CTET program, NTS, child development, Montessori programs, PDs, ECD development, these all are the PGC, are the pre-services programs. Okay. आपको टीचर बनने के लिए you must be eligible, you get the educational qualification, and after that you can start. What exactly, you know, they teach you in these degrees? They teach you how to teach. इन डिग्रीज में आप लोगों को या टीचर्स जो बनना चाहते हैं उनको वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, वो ये कि पढ़ाया कैसे जाए क्लासरूम में, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज. दूसरा, इन सर्विस टीचर्स होते हैं. जो टीचर्स ऑलरेडी पढ़ाए जाते हैं तो उनमें जो गैप होता है वो उस ट्रेनिंग के थ्रू रिड्यूस किया जाता है ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें और जो लर्निंग को पॉसिबल बना सकें. फॉर एग्जांपल, मैं जो ना 20th सेंचुरी में पैदा हुआ. I was not familiar with the technology. However, I teach the 21st century students. I was, born in 20th century, and I'm teaching the 21st century students. So there's a gap, So how I reduced, the gap through different professional development, through certifications and all these things. So I'm in a service. The teachers who are teaching already through professional development, उनकी training की जाती है, उनको courses किए जाते हैं, उनको different skills सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने जो gap है learning का वो reduce कर सकें. So it is, between pre-services as well as, in services. मुझे उम्मीद है कि ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएंगे. अब जो इन सर्विसेज होते हैं वो कैसे करते हैं? वो पीयर ऑब्जर्वेशन होती है, उनकी क्लास ऑब्जर्वेशन. अपने किसी फ्रेंड या कुलीग को बोला कि आप मेरी क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन करें और उसके बारे में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें. और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में यू विल बी फाइंडिंग बोथ द पॉजिटिव थिंग्स एंड द वीकनेसेस. ओके, सो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ओके, so in the peer observations you will be finding the strength and weakness. So the weakness पे आप फिर काम करना शुरू कर लेंगे कि आप उसको कैसे रिड्यूस किया जाए. दूसरा, आप रिकॉर्डिंग करें उसकी, अपने लेसन की, जो ना सेल्फ रिकॉर्डिंग. और फिर आप देखें कि इस लेसन को जो मैंने प्लान किया था उसको मैंने सही डिलीवर किया है या नहीं किया. जो उसकी वीक पॉइंट्स हैं आप उसको बेटर बनाएं और नेक्स्ट कोशिश करें कि नेक्स्ट लेसन में वो इम्प्रूव हो जाए. एंड देन स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन. So you evaluate by yourself by the recording this one. So this is one of the method by the micro teaching. By peer observation, you can evaluate yourself through the constructive feedback and reduce the gap. And by recording yourself these lessons and identify what gaps as you planned, you delivered it accordingly or not. Okay. So the next thing is that इसकी ये हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम कैसे करता है. जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं और हाउ इट वर्क्स. डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं. इन सर्विसेज पीयर ऑब्जर्वेशन होती है, आप रिकॉर्डिंग करते हैं लेसन्स की. जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है इन सर्विसेज में वो होते हैं. तो ये सारी चीजें जो है ना क्लासरूम में और बिफोर क्लासरूम, एंटरिंग इन द क्लासरूम, these all should be done before entering the classroom. So whatever you learn during these degree programs and PDs and courses, you should implement in the classroom and then evaluate after. There are some facts about the micro teaching, that it's relatively a new experience or innovation in the field of specifically in teacher education, student teaching. Reducing class size का reduce इसमें कम होता है, and it's a training technique होती है. This is one. और it's a design to train the teachers होते हैं जिसमें session होता है between 5 to 10 minutes or sometimes 5 to 20 minutes. You teach one skill at a time. एक skill एक ही वक्त में पढ़ाया जाएगा. और दूसरा ये होता है कि इसका जो स्किल डाउन होता है क्योंकि नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट और द स्टूडेंट्स, जो टीचर स्टूडेंट्स इसमें कम होते हैं. and there is a provision of educative feedback
अब इसमें जो ट्रेनी टीचर्स होते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है ताकि अपनी वीकनेसेस को कम कर सकें, एंड इट फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स एंड ऑन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इजीली मास्टर्ड, ताकि वो उस चीज को जल्दी से सीखा जाए और उस क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किया जाए. सो एट अ टाइम ट्रेनर्स दे फोकस ऑन वन स्किल, उसे एक ही स्किल्स पे फोकस करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ the what we call facts about the micro teaching. So looking for the above characterism, the term micro teaching may define approximately the technique or device imparting training to the inexperienced or experienced teacher. As I said, pre-service and in-service teachers, okay, to boost up the skills, reduce the complexities. अब ये इसका cycle है. This is cycle for the micro teaching skills. First, the trainer plans, then teaches and provides the feedback, and then after evaluation, it replans, reteach and feedback. Okay. So मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइक्रो टीचिंग किसको कहते हैं. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो ये दोस्तों से शेयर कीजिएगा और अपने फीडबैक और कमेंट से आगाह कीजिएगा. हम मिलेंगे दूसरे लेसन में इंशाल्लाह. Thank you so much. Till that, stay blessed and take care.